Hello, hi, very good morning, good morning, good morning. Very good morning to all of you guys. Welcome to Oliveboard. This is Aditya. I hope I am audible and visible to all of you guys clearly. पहले check कर लीजिए picture quality, sound, everything is fine. Nothing is a challenge, so we can start the session immediately. Yeah, good morning, good morning, good morning. Very good morning. अभी मेरी स्क्रीन पर तो अभी तक नहीं दिख रहा है. ठीक है, अभी आ गया है. चलिए. So new month start हो गया आपका. That is June. So now from June onwards, you will be getting the notification every month and almost every weekend at from the next month after 1.5 month we can say that every weekend there will be one examination. कभी आप लिख रहे होगा आरआरबी पीओ प्री देन आरआरबी पीओ क्लर्क देन आफ्टर दैट मेंस आ जाएगा फिर आईबीपीएस आ जाएगा सो इन बिटवीन दैट ऑल द वीकेंड्स विल बी बुक्ड फॉर यू ठीक है चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन आज का 1 to 3 of June के करंट अफेयर्स के ऊपर देखते हैं क्या है न्यूज हाइलाइट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7% रियल जीडीपी ग्रोथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर तो अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये आपका बनता है 2024-25 इन दिस फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का प्रेडिक्शन है 7% जीडीपी रेट इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे पहले आप लोग अपने थोड़े से हालचाल बताते हुए चलिएगा क्या रहा वीकेंड कैसा रहा टेम्परेचर आपके यहाँ थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ है या स्टिल टेम्परेचर इज अराउंड 40 41 38 वही चल रहा है या कम होने स्टार्ट हुआ है बिकॉज इन साउथ आई एम सिटिंग हियर इन बेंगलुरु हियर द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन नाउ मतलब सही चल रहा है यहाँ पर तो ठीक है ठंडक है India's GDP growth rate will be 8.2% in the financial year 2024 as against 7% in the financial year 23. So last year के comparison में 8.2% financial year में 24 में GDP rate आपका 8.2% and Ministry of Statistic Program Implementation have presented this data. तो इनके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा हो गया सो दिस इज द जीडीपी प्रोडिक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी वो एक्सप्लेन करूंगा सेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल 10 year ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम RBI came with the auction. RBI wanted to sell the green bonds. Green bond means which are related to renewable energy. But RBI cancelled it. What are the reasons? We are going to know in the session itself. RBI finalized the framework for self-regulatory organization for the fintech sector. This was there in the news from long back. It was there in the news from long back. And self-regulatory organization, now the final framework is out. So we'll see about it and definitely it is going to create the question in written as well as interview. दोनों जगह पर आपको देखने के लिए इसके क्वेश्चन मिलेंगे. Gross GST revenue in May 2024 is around 1.73 lakh crore rupee. So highest GST collection revenue was in April 2024. If you remember, do write it in the comment box. फटाफट से chat box में लिख रहा कितना था जीएसटी कलेक्शन आपका अप्रैल 2024 का कैनरा बैंक डाइल्यूट 14.5% स्टैक इन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस वाया आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में कैनरा बैंक ने अपना 14.5% डाइल्यूट किया है फुल डिटेल में बात करेंगे आईपीओ का डिस्कशन भी देखेंगे दैट व्हाट इज द रूल ऑफ IPO. Axis Bank Mastercard introduced NFC sound box, near field technology sound box. Tap करो, pay करो, and it will be giving you the same sound where like you are using QR code. बोलते हैं ना पेटीएम करो और फिर this much amount credited to the merchant account, so that all the facilities will be available on the tap to pay sound box functionality. तो वो भी available होगा. Even on the POS system you can make the payment. तो ये होगा आपका साउंड बॉक्स एनएफसी पर एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी डिटेल में मैं बताऊंगा एनएससी इंडाइसेस लॉन्च फर्स्ट एवर इंडिया ईवी इंडेक्स भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोग रेडी होंगे दोज हु वांटेड टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी बिकॉज इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल राइट तो इसका इंडेक्स भी आ गया है इसके बारे में भी बात करेंगे तो ये थे कुछ मेजर हाइलाइट्स अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल्सो वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूज टू डिस्कस टुडे क्योंकि आपके पास कलेक्टिव न्यूज है सैटरडे संडे का 2 दिन के न्यूज बहुत हो जाते हैं तो वो दोनों न्यूज मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा होमवर्क चेक कर लेते हैं पहले क्विकली Which bank became the inaugural Indian bank to execute an export finance transaction with RXIL Global Finance IFC
लिमिटेड करेक्ट आंसर था आपके पास यस बैंक। काफी लोगों ने आंसर किया एंड द आंसर इज आल्सो करेक्ट, राइट। यस बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू ऑफर the invoice financing facility in the International Financial Service Center Authority। तो IFSCA में इनवॉइस फाइनेंस फैसिलिटी ऑफर करने वाला पहला बैंक बन गया आपका यस बैंक। Which company became the first Indian firm to manufacture fuel for Formula One race cars? तो F1 cars के लिए फ्यूल बनाने वाली पहली कंपनी का नाम है, इंडियन कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। So Indian Oil Corporation Limited, it is a Maharatna company headquartered located in New Delhi, 1959 it was founded. Shrikant Madhav Vaidya sir is the chairperson of the company, and this company is in process to manufacture the India's first F1 car race fuel. Next, who has made history became the first sniper of BSF Border Security Force की पहली वुमेन स्नाइपर अपॉइंट हुई हैं सुमन कुमारी मैम। So सुमन कुमारी मैम made the history and became the first ever appointed the woman sniper in BSF Border Security Force। तो ये थे हमारे पास आंसर्स और चेन हीरोज के नाम देख लेते हैं। शिल्पा जी, देन वैष्णव। हाँ, यहाँ पर एक न्यूज है, एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछा था, सर आरबीआई इज मूविंग देयर गोल्ड फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम रिजर्व बैंक वॉल्ट टू इंडिया, व्हाट इज दिस न्यूज ऑल अबाउट? ये न्यूज किस बारे में है? मैं शॉर्ट में बता देता हूं, फिर आपको मैं इसका एक डिटेल वीडियो में करने वाला हूं, वो भी आपको मिल जाएगा ओवर द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। So Reserve Bank of India capped gold during the year 91-92 when India was facing the crisis। आप लोगों ने सुना होगा 1991 crisis of India। India does not have money at that time to run the economy। ऐसा situation आया था। Mr. Manmohan Singh was the finance minister at that time। So at that time, Reserve Bank of India came forward and supported government of India, said that we have gold, we can keep this gold in UK and we can borrow the loan from the international market। After keeping this gold, हम international market से loan ले लेते हैं, we'll return it later। And India was able to return it। India was able to return it within a year. That money was returned. So it is not a case like that gold we have kept there. That gold was still a collateral. At that time it was kept as a collateral। 91 में उसको collateral के form में रखा गया था। We were able to return that money within a year. But due to operational cost, due to this transitional cost, RBI have not taken back their gold from UK। And although it is okay that gold was kept there in UK में वो जो gold हमने रखा हमारा solid gold है, that gold was able to generate profit for Reserve Bank of India for all the time, क्योंकि वो use होता है trade में, you can trade in the international market by using it। Even RBI increased the quantity of gold by buying more। तो आरबीआई और गोल्ड खरीदता रहा और वॉल्ट में सेव करता रहा। सो इट वाज अ टाइप ऑफ सेविंग आरबीआई वाज डूइंग देयर। नाउ आरबीआई इज मूविंग दैट गोल्ड बैक टू इंडिया। अब वापस लेकर आ रहा है आरबीआई उस गोल्ड को। बाकी मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो 91 में हमने रखा था, अभी तक रखा हुआ है, नीड में नहीं था, वापस ला रहे हैं। सिमरन जी हैं, देवी। आफ्टर दैट गुप्ता जी, सूर्या, थैंक यू। वॉच सिनेमा जी, आई डोंट नो कौन सा न्यूज आपको समझ में नहीं आया बैंकिंग में, स्पेसिफिकली बताइएगा विच बैंकिंग न्यूज यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। ठीक है, डिटेल में मैं समझा रहा हूं, बाकी आप बता दीजिएगा कौन सा न्यूज है। सबा, मनु, रुद्रा, आफ्टर दैट रचना जी, अमन, हारिका, टेक्नी जीनियस, दिव्या, पंकज, हर्षा, जग्गी दुर्गा राव जी, शिवानी, जॉय, आफ्टर दैट अरिता, मुकुल, मानस, दिव्या, स्वरूप एंड अजय। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर आंसर्स, थैंक यू फॉर आंसर्स। रुद्रा, इसमें 11 मेंबर्स ही थे आपके, ठीक है, 11 मेंबर्स थे। कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर्स नहीं है, 11 मेंबर्स है। होमवर्क के क्वेश्चंस ले लीजिए कल के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मेट्रो? इस मेट्रो का लेंथ कितना है? सेकंड क्वेश्चन है, पीएम मोदी witnessed the commencement of core loading at India's first indigenous prototype of
fast breeder reactor in which state? If India will be able to create this reactor, India will become second nation in the world after Russia to have such type of fast breeder reactor. So this fast breeder reactor will be created in which state? Prototype was launched recently. अभी इसको कहां पर बनाया जाएगा? Next है, which of the following has become the first country in the वर्ल्ड हैव गिवन राइट टू एबॉर्शन देने वाला पहला नेशन वर्ल्ड का कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इंटरनेशनल न्यूज में जब भी कहीं पर कोई कंट्री का नाम आता है, दिस कंट्री हैव स्टार्टेड दिस कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, एंड ओवर दिस इनिशिएटिव ऑलवेज द सच टाइप ऑफ न्यूज इज इंपॉर्टेंट. So PNB SO स्पेशलिस्ट क्रेडिट ऑफिसर बैच इज लाइव, पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच इज लाइव, IDBI हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से. अभी पीएनबी का आपका बैच लाइव है. यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. इसका जो रिटर्न का रिजल्ट है दैट इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम आफ्टर 5th of June. 6th को भी आ सकता है, 7th को भी आ सकता है. वेरी सिमिलर टू योर RRBPU नोटिफिकेशन. चलिए आते हैं आज के न्यूज की तरफ. हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूज एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज एंड शेयर द कूपन कोड आदित्य प्लीज for the maximum discount and to prepare under the personal guidance of Aditya sir. चलिए आते हैं आज के न्यूज में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड 7% रियल जीडीपी ग्रोथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर. सबसे पहले ये रियल जीडीपी क्यों लिखा है? सो देयर आर टू टाइप ऑफ जीडीपी. इज दैट? यस, वन इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. एक को बोला जाएगा नॉमिनल जीडीपी. सेकेंड वन इज कॉल्ड रियल जीडीपी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी? किसी को कोई आइडिया कि क्या डिफरेंस होता है सर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में? सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज the sum of all the goods and services produced within the geographical boundary of a country during a financial year, right? एक साल में इंडिया के अंदर, let's take the example of Indian GDP. So in 1 year within India, total goods and services produced, their market value means their price is called GDP. एक साल में एक इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, सर्विसेज का, उस प्रोडक्शन का जो मार्केट वैल्यू है उसे कहा जाता है जीडीपी. नाउ मार्केट वैल्यू गेट इंक्रीजेस, इट गेट इंक्रीजेस. व्हाई? इफ द प्राइस विल इंक्रीज, मार्केट वैल्यू विल इंक्रीज. करेक्ट है? प्राइसेस आपके इंक्रीज होते जाएंगे, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, इट विल इंक्रीज द जीडीपी ऑल्सो. So GDP calculated at two price. One at the current price, which is inflated price, because inflation is increasing, prices are increasing. So on the increased price when we are calculating GDP, that is called nominal GDP. So nominal GDP means GDP calculated at inflated price. इन्फ्लेटेड प्राइस. समझ में आ रहा है? बढ़े हुए दामों पर जब जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो है नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी मींस एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन. जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन. इसमें क्या किया? अभी इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया. दैट नो, इन्फ्लेशन रेट वाज 6%, तो आपने क्या किया? 6% से उस पर्टिकुलर प्राइस को नीचे कर लिया. सो ऑन द फिक्स्ड प्राइस व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेटेड प्राइस, तो वो हो गया आपका कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी. ये डिफरेंस है दोनों में. इज माय पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो यस और नो. बोलो यस और नो. या फटाफट से चलो आगे मूव करें. सीसी लिख देना चैट बॉक्स में, पॉइंट क्लियर है तो बहुत बढ़िया. नॉमिनल रियल जीडीपी डिफरेंस क्लियर. बहुत शानदार, बहुत समझदार हो आप. एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, वेरी गुड. चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड 7% जीडीपी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन इट्स एनुअल रिपोर्ट. सो दिस विल बी द प्रेडिक्शन ऑफ जीडीपी by the Reserve Bank of India for the financial year 24-25. While for the fiscal year 24, last financial year, it was 7.6%. So last financial year 2023-24, what was the GDP calculated by the Reserve Bank of India? 7.6% was the GDP.
For the current financial year 2024-25, what is the GDP prediction by the Reserve Bank of India? For this year, 7%. So these are the GDP data presented by Reserve Bank of India. After that, recently Reserve Bank of India transferred 2.11 lakh crore rupee to the government of India in the financial year 23-24. It has been announced by the Reserve Bank of India. This amount transferred by RBI to government in the form of dividend, a type of profit sharing by the RBI. I hope the point is clear. RBI profit generate करता है, तो profit जो generate हुआ उसका एक हिस्सा RBI ने किसको दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड के फॉर्म में। वही है आपका 2.11 लाख करोड़ रुपए। पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। फिलिप बेटा, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ कंटेंट टीम, आई एम अ फैकल्टी। आप एक मेल ड्रॉप करिए सपोर्ट पे, फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट, अबाउट द मॉक टेस्ट, अबाउट बोल्ट एज वेल। तो वो सब मेरे उसमें नहीं आता है, तो कंटेंट का पार्ट है। आप एक बार सपोर्ट पर मेल करिए, ठीक है? चलिए आगे आ जाइए। क्लासेस में जीए में कोई चैलेंज है मुझे बताइए, आई विल रिजॉल्व। नेक्स्ट न्यूज है आपके पास, जीडीपी प्रोडिक्शन ही है। इट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैव प्रेजेंटेड द डेटा अगेन। सो आरबीआई का डेटा आ गया, अभी आ गया एमपीएसओआई का। So Ministry of Statistics Program Implementation presented the data. According to that, the GDP rate of India 2024 and 23. They have given the data of last year, last to last year. देखो, हम करंट की बात करेंगे ना, जो भी आपका चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर विच वाज स्टार्टेड रिसेंटली इन अप्रैल एंड विल बी रनिंग टिल नेक्स्ट मार्च, सो इट विल बी कॉल्ड FY25। याद रखना, ये जो करंट वाला है इसको हम बोलते हैं FY25, not 24। 24 is over now, 24 was 23-24 which is over now, in March 23-24 which is over now. So this is the data given by Government of India. According to this data, 2022-23 GDP was 7%, not prediction. GDP was 7%. And 2020 and 2023 and 24, in this year it was 8.2%। तो ये डेटा है भाई साहब, 8.2% का जीडीपी भारत सरकार बोल रही है इतना जीडीपी हमने अचीव किया है। कब? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो ऑल दीज आर द डेटा गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन दे हैव गिवन द नंबर्स आल्सो। द नंबर्स आर लाइक रियल जीडीपी। देखो रियल जीडीपी बोल रहे हैं, रियल जीडीपी मींस एट कांस्टेंट प्राइस, मींस adjusted with the inflation, it was real GDP was 173 lakh crore rupee, 173 lakh crore rupee was the real GDP for the financial year 23-24। ये रहा real GDP। While nominal GDP means which is not adjusted with inflation, which are calculated at a current price, जिसमें inflation वाला price included है। So 23-24 nominal GDP was 269.5 lakh crore। So when you are adjusting with the inflation, it is 173 lakh crore, 173 lakh crore, and when you are not adjusting with the inflation, it is 269 lakh crore। So this is the data given by the government of India regarding the GDP। Point clear है भाई? Yes, सब लोगों को क्लियर है? नॉमिनल जीडीपी क्लियर, रियल जीडीपी क्लियर। नेक्स्ट न्यूज है आपका रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे न्यूज हैं आज। नीड योर एनर्जी एज वेल टू कंप्लीट द न्यूज ऑन टाइम विद द फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए चलिएगा। FY23 में 7.2 है सर। FY23 में क्या हो गया भाई? एक बार चेक कर लेते हैं। FY23 बेटा ये आरबीआई का डेटा अलग है आपका। आरबीआई वाला देखो डेटा अलग है आपके पास। 7 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर 6 लिख दिया है क्या? नहीं ये सही है, ये आरबीआई का डेटा अलग है बेटा। आरबीआई का डेटा अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा अलग है, ठीक है? सो आरबीआई वाला अलग है, गवर्नमेंट का डेटा अलग है। शाश्वत दोनों याद रखने हैं आपको। हाँ,
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने डेटा दिया है, वो अलग है। चलो नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनलाइज एसबीएम बैंक इंडिया एट 88.7 लाख करोड़ रुपए, 88.7 लाख करोड़ रुपए का फाइन इंपोज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑन विच बैंक? ऑन एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक इज नॉट अ इंडियन बैंक, ये भारत का बैंक नहीं है, बट दे स्टार्टेड देयर सब्सिडरी इन इंडिया। सो एसबीएम बैंक इज अ फॉरेन बैंक। नाम पता है किसी को इसका? इट इज द स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। लाइक वी हैव द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सबसे बड़ा इंडियन बैंकिंग जाइंट, भारत का सबसे मजबूत सबसे पावरफुल बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? Very similar to that, in Mauritius, they have a bank that is called State Bank of Mauritius. In short, it's called SBM, like we called SBI. Correct है? तो वैसे ये लोग बोलते हैं SBM. So State Bank of Mauritius. State Bank of Mauritius started their subsidiary in India that is called SBM India. इसको नाम दिया इन्होंने SBM India. भारत में बनाया, भारत की कंपनी के फॉर्म में बनाया है इसको. So this company have the license working in India as an Indian bank, as an Indian commercial private bank. तो भारत में प्राइवेट बैंक की तरह ये काम कर रहा है, बट दे नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So they wish to follow certain guideline regarding LRS. LRS क्या है? Liberalized Remittance scheme. What is the meaning of remittance? Indians are earning money in foreign country and they are sending money back to India. This is called remittance. Inward remittance बोलते हैं इसको. So inward remittance, outward remittance. Inward remittance means Indians are earning money in foreign country after paying taxes and all. When they are sending money back to India, this is called inward remittance for India. Outward means foreigners are earning money in India. After paying taxes, they are sending money back to their nation. This is called outward remittance. So this is called remittance. I hope it is clear. What is the meaning of remittance? Now, Reserve Bank of India have a scheme called liberalized remittance scheme, under which 250,000 US dollar can be transferred in 1 year, in one financial year. 250,000 rupee can be transferred. If the limit get crossed by any bank due to any reason for a particular customer, it is against the rule of RBI. RBI के rule के against में हो जाएगा. So initially when the facility was launched in the year 2004, it was launched only with the limit of 25,000. But with the time it increased. In 2015, it was made 250,000 US dollar can be transferred by using this facility. So this facility is called liberalized remittance scheme, under which it provide a facility to transfer money from the foreign nation by the Indians to India. इंडियंस फॉरेन नेशन से उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है ना मेरा पॉइंट क्या है? सो एसबीएम इंडिया, which is the subsidiary of State Bank of Mauritius, does not follow or fail to follow few rules regarding this scheme. Because of that, RBI imposed the fine. फाइन बताओ कितना फाइन लगाया? मेन न्यूज तो फाइन था, अभी आप लोगों ने देखा भी है. फाइन बताओ जरा कितना फाइन लगाया? So this SBM India, its headquarter located in Mumbai, Maharashtra. इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. while SBM headquarter is in Mauritius. हाँ भाई, कितना फाइन है? 88.70 लाख, 88.70 लाख रुपी फाइन है. करोड़ नहीं लगा हुआ, बस लाख है. ठीक है, हाँ, 88.70 लाख. चलो आगे आ जाओ अगले न्यूज पर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड 10-year green bond auction for the first time. What is the meaning of green bond? Let's start from here. That what is the meaning of green bond? So bond is a type of debt instrument. It is a debt instrument. Debt instrument means I am borrowing certain money from you. मैं आपसे मान लीजिए लोन लेता हूँ. I am saying that I need 10,000 rupees from you. You said, okay, sir, I am a big person. I have lots of money. I'm working as a bank PO. I have lots of money. You want to take? You can take. I'll give you 10,000 rupees. So you are ready to give me 10,000 rupees, but you need some assurity, sir. What is the assurity that you are going to return my money? I said, do one thing on a legal paper, on a stamp paper. I'll give you in return that I am borrowing 10,000 rupees from you and I'll return this money back after 1 month with this much rate of interest. You said, okay.
Perfectly fine. So what I have done is I have given you on a complete contract between us that I am borrowing 10,000 rupee on 7% rate of interest. I'll return this money back after 1 month, and all these things. I have given it back to you in form of return. So this return format, this contract is actually bond. यही contract क्या कहलाता है आपका bond in the financial market, in the money market, capital market, when you listen bond. तो ये bond है. Now the bond which is related to raising the fund from market for the renewable energy, only for renewable energy purpose, green energy, hydrogen energy, such type of project, that is called green bond. तो ग्रीन बॉन्ड में भी कैटेगराइजेशन आ गया. आपने सुना है ब्लू बॉन्ड है, येलो बॉन्ड है. ब्लू बॉन्ड मीन्स विच इज रिलेटेड टू वाटर एनर्जी, हाइडल एनर्जी से रिलेटेड जो होगा वो होगा आपका ब्लू बॉन्ड. येलो बॉन्ड विच इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी. सो विद इन बॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑल्सो नाउ वी हैव further division. Correct? Now, Reserve Bank of India had a plan to, means that was a plan of Government of India. Government of India had a plan to do the auction of 12,000 crore rupee, 12,000 crore rupee green bond auction in the first half. April, May, June, July, August, September. So before September, Government of India was planning to borrow 12,000 crore rupee from the market for the green bond purpose, which could be utilized by the Government of India in the renewable energy sector. I hope you got my point. Recently, RBI wanted to issue these bonds, or RBI started the auction. So in the auction, investors come and they put the bidding. यहां पर आरबीआई क्या करता है, ऑफर रख दिया आरबीआई ने, बॉन्ड है, यू वांट टू बाय, यू कैन बाय, पुट योर बिडिंग्स. इफ द बिडिंग्स डजंट कम इन डिमांड, अगर समझ में आता है कि भाई डिमांड नहीं है, बिडिंग नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू बाय एट दिस मोमेंट, नहीं परचेस कर रहे हैं, then government or RBI need to take the decision to cancel it. One of the reason was election also. Right now, people are not aware about that government will repeat or government will not repeat. Next government which will be formed, they will be focused on the renewable energy or not. Because you are investing money in renewable energy. If renewable energy will not increase in India, your investment is not going to increase properly. So this is a risk. Because of that, people, means investors, have not shown proper interest in these green bond. RBI cancelled the auction for the first time. पहली बार ऐसा हुआ है कि RBI ने क्या किया है, इसका ऑक्शन कैंसिल किया है. बोलो मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? So green bond were planned to issue in two tranches 6,000 crore rupee for the period of 10 years. 10 साल के लिए बॉन्ड इश्यू होने थे. अभी RBI ने ऑक्शन कैंसिल किया for the first time. The bid were between 7% to 7.6% rate of interest, which RBI not ready to pay, and the treasury had at the private bank side. At the time of auction, the benchmark yield was 6.99%. So RBI ने बोला भाई 6.99% का rate of interest देंगे. But investors were demanding 7% up to 7.6%. That was the demand. RBI said no, this much rate of interest we are not able to pay. So much negotiation is not required. Let's cancel the deal. तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया. न्यूज क्लियर हो गया भाई? बोल दो हाँ, बोल दो क्लियर हो गया है. फटाफट से ये वाला न्यूज क्लियर है तो आगे मूव करेंगे. एक बार चैट बॉक्स में सीसी. चलो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं. क्लियर है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं. RBI finalized the framework for the self-regulatory organization in the fintech sector. Fintech आप लोग सब समझते हैं. Paytm, फोन पे, Amazon Pay, Flipkart Pay, all these are the examples of fintech sector. All these are the examples of fintech. Now, fintech companies in India, to increase the fintech culture in India, fintech business in India, Reserve Bank of India came with the guideline of self-regulatory organization. So, what will be the self-regulatory organization? These will be the little bit powerful organization. For example, self-regulatory organization, one of the
body of phone pay, because phone pay is one of the dominating UPI service provider in the market, करेक्ट है? आप देखोगे अगर यूपीआई का ओवरऑल मार्केट शेयर, उसमें फोन पे का मार्केट शेयर अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा है फोन पे का मार्केट शेयर, करेक्ट है? तो फोन पे अगर इनिशिएटिव लेता है दैट आई वांट टू सेट अप अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिनटेक, so that self regulatory organization will act as a monitor for the fintech companies. Fintech companies can take the partnership, and this self-regulatory organization will take all the set of rules and regulation from RBI and will help RBI to implement it in the market. तो ये क्या करेगा? ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, लाइक मॉनिटर इन द क्लास व्हेन यू वर देयर इन कॉलेज टाइम, कोई था आपके क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एनीवन इन द सेशन हु वाज द सीआर इन द क्लास रिप्रेजेंटेटिव. So this self-regulatory organization will act as a class representative who will be the link between class teacher and the student. Who are the student? These companies, fintech companies. Who is the teacher? Reserve Bank of India. तो रेगुलेटर और फिनटेक कंपनीज के बीच में ये एक्ट करेगा एज अ प्लेटफॉर्म. दैट विल बी कॉल्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पकड़ में आना चाहिए कि होगा क्या है यार, ये क्या होगा ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो क्लियर है देन वी कैन लर्न द पॉइंट्स. पॉइंटर्स फिर याद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट क्या डेडलाइन है, व्हाट इज द गाइडलाइन, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए. So, for the encouragement of the financial technology sector, encouraging the entities to have the representative membership in the fintech sector. So, all these fintech company will be able to take the membership of this self-regulatory organization. Banking regulator have indicated there may be more than one self-regulatory organization in the financial sector. जरूरी नहीं है कि एक ही हो, जरूरी नहीं है कि एक हो. So that is why RBI have not created one more all India financial institution. Like we have similar type of organization right now, like NABARD. NABARD is a intermediate, or NABARD is a monitor of agriculture sector. अगर आप देखो सेम कॉन्सेप्ट है इंडिया में. NABARD is doing same, Exim Bank is doing same, CDB is doing same, but they are called all Indian financial institution. This will be called self-regulatory organization. RBI said it is not necessary there will be only one. There will be more than one self-regulatory organization possible in the fintech sector. जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आरबीआई ने कहा है. So non-bank financial companies, account aggregator, NBFC peer-to-peer, all these will be able to take the membership. All will be able to take the membership of it, excluding banks. बैंक नहीं लेंगे भैया इसकी मेंबरशिप. इसमें इसमें मेंबर्स जो होंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के, bank will not be able to take the membership of it. So it will be a non-governmental organization that act as a bridge between industry player and the regulator. जो मैंने आपको बताया, it will help RBI to implement the set of rules and regulation. Any organization want to apply for the self-regulatory organization for the fintech, they should have minimum net worth of 2 crore rupee. तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक? 2 करोड़ रुपए का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है. बोलो यस और नो, क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया? यस. तो अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए एंड विल गेट फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर सून. उसका फिर आपको नाम भी याद करना पड़ेगा, हेडक्वार्टर, हु इज द चेयरपर्सन, हु इज लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज पर आते हैं. आरबीआई न्यूज वी हैव कंप्लीटेड. देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूज रिगार्डिंग आरबीआई न्यूज टुडे. जीएसटी revenue collection in May 2024 is 1.73 lakh crore rupee. So 1.73 lakh crore, that shows the increment of 10% compared to the same month last year. May 2023 से May 2024 का जीएसटी 10% से इंक्रीज हुआ है. इस बार का है 1.73 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन. और ये डेटा आपको सबसे पहले याद करना है. 1.73 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन है, ठीक है. एंड अराउंड 10% से आपका ये जीएसटी जो है वो इंक्रीज हुआ है.
Consider the GST collection, GST fact, and GST news in April 2024. This type of question you can expect in the examination based on the GST collection. They are not going to ask direct question that what is the GST collection. Definitely the question will be combination of GST static point and GST current recent updation. तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, इसलिए आपको स्टैटिक वाला एरिया क्लियर रखना होगा रिगार्डिंग जीएसटी. GST was implemented according to Article 279 of Indian Constitution. GST has been implemented according to 101st Constitutional Amendment Act 2016. GST collection was all-time high, that was 2.50 lakh crore rupee in the month of April 2024. ये तीन स्टेटमेंट हो गए आपके पास. स्टेटमेंट नंबर 1 is correct. GST implemented in India according to Article 279. याद कर लो, Article 279 में डिफाइन है आपका GST. तो GST implemented in India according to Article 279 of Indian Constitution. Second point है GST implemented according to 101st Constitutional Amendment Act. तो आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है GST bill, second one is GST Act. GST bill is 122nd GST Constitutional Amendment Bill and it was 101st Constitutional Amendment Act. तो बिल है 122, एक्ट है 120, 101. ठीक है, अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन बता रहा हूं. जीएसटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1st of July. सो 1st of July विल बी द जीएसटी डे दिस ईयर आल्सो इन 2024. अब तो जल्दी आने वाला, जून स्टार्ट हो गया है. इट इज इंप्लीमेंटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? आंसर इज 101st. तो जीएसटी कलेक्शन आपका क्या रहा? जनवरी was 1.72, February 1.68, March 1.78, April to December 14.97 lakh crore, April 2023 1.87 lakh crore, highest ever till April 2024, and suddenly in April 2024 2.10 lakh crore was the GST collection. Now this is the data. Highest ever GST collected in India was in the month of April 2024, that is 2.10 lakh crore. और मई में आपका आया है 1.73 lakh crore, 1.73 lakh crore. Now the data of April 23 will be the second highest. April 24 is the highest one. तो ये हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट का डेटा भी आपके पास है. न्यूज क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में सीसी लिख दीजिएगा. चलिए आगे मूव कर रहा हूं अगले न्यूज की तरफ. फिनटेक स्टार्टअप भारत एक्स. Bharat X, it is a fintech company in India, offered you POS facility, offer you payment acceptance facility, QR code facility, all such facilities are available. Buy now pay later option is available on Bharat X platform. So Bharat X acquired healthcare firm called Zenifi. Zenifi. So Zenifi is the name of healthcare company. Healthcare company, and this company acquired by भारत एक्स. भारत एक्स ने एक्वायर किया है एक हेल्थ केयर फाइनेंस कंपनी को, जिसका नाम है जीफिनी. इट विल बी एबल टू ऑफर EMI facility in the healthcare sector for taking any healthcare product, healthcare services. Now Bharat X will be offering buy now pay later option with the support of Zfini. तो Zfini को एक्वायर किया है भारत एक्स ने, जो कि एक फिनटेक कंपनी है इंडिया में, बेंगलुरु बेस्ड आपकी फिनटेक कंपनी है. मेहुल नाथ जिंदल इज द MD and CEO ऑफ इट. कैनेडा टू डाइल्यूट 14.50% stake in the Canara HSBC Life Insurance via IPO. Bangalore headquartered Canara Bank approved the initial processing of diluting 14.5% stake in the IPO. Canara Bank currently holding 51% stake, majority in the life insurance. HSBC Insurance Asia Pacific owns 26% and Punjab National Bank remaining 23%. तो 26, 23 and 51 ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग है आपके किसकी? एक कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस. सो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, इज इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी? नो, इट्स अ प्राइवेट कंपनी which is working as a subsidiary of these three organizations. Now, as per the rule of SEBI, 25% will be listed in the market for IPO. इसका क्या होगा? 25% आएगा मार्केट में IPO के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए. What is IPO? When the company is coming in the stock market for the first time and we people
investing in that company. We are trying to make bid to get the equity of that company. This is called IPO. इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, तो पहली बार कंपनी आती, तो LIC आया था, फर्स्ट टाइम आईपीओ था. इफ LIC विल कम सेकंड टाइम, इट विल बी कॉल्ड FPO. अब अगर LIC आएगा मार्केट में, तो हम नहीं बोलेंगे आईपीओ. आईपीओ एक ही बार बोलते हैं. ठीक है, जैसे होता है ना, व्हेन सन इन लॉ गोज टू द इन लॉज होम फॉर द फर्स्ट टाइम, अलग ही सम्मान होता है, बहुत ही अलग होता है. सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम धीरे धीरे कम होने लगता है. फर्स्ट टाइम वाला, दैट इज अनमैचिंग. सो द फर्स्ट टाइम व्हेन अ कंपनी कम इन द स्टॉक मार्केट, उसका जो रिस्पेक्ट होता है, और द पीपल दोज हु वांट टू बाय देयर इक्विटी, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. एवरीवन वांट टू बाय. Second time, FPU, follow on public offering. Already public is holding the data. कुछ रियलिटी भी समझ में आ गई है, तो सेकंड टाइम में वो नहीं रहता है. बोलो, समझ में आया? सीरीज ऑल टाइम बेटा. अब यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर द टेलीग्राम. आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए टेलीग्राम पर. कोई चैलेंज है तो ये आईडी है आदित्य सर ओबी. दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. यू कैन कनेक्ट विथ मी. आई विल इन्फॉर्म माय ऑलिवबोर्ड टीम. दे विल गाइड यू ओवर दैट व्हाट एवर योर क्वेरी इज. ठीक है. हम्म. Hi Anushka, साहू जी, आई एम परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. ठीक है, चलो, ये वाला न्यूज क्लियर हुआ. तो यहां पर ओवरऑल न्यूज क्या है? 25% स्टैक आ रहा है आईपीओ में, आउट ऑफ विच 14.5% will be from Canara Bank. Remaining certain amount will be from your Punjab National Bank and HSBC Insurance. तो ये सब भी अपना करेंगे. So Canara Bank also approved raising 4,000 crore via additional Tier 1 bond in the financial year 24 and 4,500 crore via Tier 2 bond in the current financial year. अब ये बेसल्स का कॉन्सेप्ट आ गया, टायर 1 एंड टायर 2. बेसिक कॉन्सेप्ट पर, टायर 1 इज अ टाइप ऑफ फंड विच इज ओन फंड, टायर 2 इज अ टाइप ऑफ मार्केट बोरोइंग. तो टायर 1 टायर 2 बॉन्ड्स के थ्रू ये मार्केट से फंड रेज करने वाले कैनरा बैंक. Just because they want to increase their presence in India, they are going to open new branches. तो देखो, हर चीज कहीं ना कहीं लिंक होती है ग्रोथ से. और अच्छी बात आप लोगों के लिए होती है, वेन एवर बैंक इज planning for expansion. Expansion impossible without bankers. You can't do expansion without bankers. So if Canara Bank is planning expansion, they need more bankers, and they will create the requirement for this. The requirement increase hogi, either at clerk level or at PO level or at both level. A little bit increment in the number of seats will be definitely possible. So MD and CEO of Canara Bank is Mr. K. Satyanarayan Raju sir. Bank is doing great under his leadership actually. Okay. चलो, अरे विदु शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? खुश कर दिया सुबह सुबह आपने. चलिए भाई, विदु सर भी सुबह सुबह आ गए हैं, अच्छी बात है. अनुष्का, वाई यू आर लेट? नेटवर्क इशू था, ठीक है, कोई बात नहीं. अगले न्यूज पर आओ. एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड इंट्रोड्यूस NFC साउंड बॉक्स. NFC होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट डज इट मींस? Maybe you guys have used certain time that there is a POS machine, point of sale machine, and without swiping card, वो स्टाइल से ऐसा करते हैं ना, टैप कर दिया एंड पेमेंट हैज बीन डन. हल्का सा आपने टैप किया एंड पेमेंट डन. दैट इज कॉल्ड नियर फील्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है, NFC बोलते हैं उसको, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नाउ व्हेन यू विल बी डूइंग दिस, even on the QR code nowadays, this facility is available that we can tap and make the payment. तो अब वो क्या करेगा, आपको साउंड भी देगा दैट ओके 5,000 रुपी और 3,000 रुपी पेड विद द सपोर्ट ऑफ NFC. NFC पर एक चीज है, यू कैन मेक द पेमेंट अप टू 5,000 रुपी. अबव दैट पिन इज रिक्वायर्ड. उसके ऊपर आपको पिन डालना पड़ता है. 5,000 तक का पेमेंट हो सकता है with the near field communication technology. Above that pin is necessary as per the RBI guidelines. तो याद रखना 5,000 is the limit of it. Now, Axis Bank and Mastercard introduced a sound box. साउंड बॉक्स कोई नई चीज नहीं है, अब पेटीएम वाले कॉन्सेप्ट है. पेटीएम करो एंड ऑन पेटीएम यू हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट दे हैव लॉन्च्ड, बट दे लॉन्च्ड फॉर NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. So innovative device will post install all type of solution, all type of payment, QR code, UPI, tap to pay, tap plus pin, everything will be available over it. सब कुछ इस पर अवेलेबल होगा. टैप प्लस पिन ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 5,000 रुपी मोर देन दैट
you cannot make the payment without pin. So tap plus pin will be applicable over it. ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके काम की नहीं है. यहां से मेनली आपको याद रखना है एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड, इन्होंने कोलैबोरेशन करके इंट्रोड्यूस किया है दिस एनएफसी साउंड बॉक्स. अगला न्यूज है NSE इंडाइस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ईवी इंडेक्स. सबसे पहले पकड़ेंगे यहां से एक वर्ड इंडेक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? सो मीनिंग ऑफ इंडेक्स क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? इंडेक्स का मीनिंग है, आप लोगों ने सुना होगा सेंसेक्स. सबने सुना है सेंसेक्स? सेंसेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स है, निफ्टी है. दिस एवरीवन हैव हर्ड इट. यस. हाय सागर, गुड मॉर्निंग. या ठीक. So Sensex, Nifty, everyone remember, everyone heard this. Sensex is the index of top 30 companies listed in BSE, Bombay Stock Exchange. So BSE में जो टॉप 30 कंपनीज हैं, टॉप पर हैं जो कंपनीज, बिल्कुल बढ़िया कंपनीज हैं, टॉप ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ब्लू चिप कंपनीज. So group of that company is called Sensex. So the performance that if these 30 companies are going up, so their average will increase. Then it will be called Sensex closed at top or Sensex closed above compared to yesterday because average of 30 companies are increasing. If average of 30 companies is decreasing, Sensex came down. तो सेंसेक्स बढ़ना, सेंसेक्स नीचे आना, इससे क्या पता चल रहा है? 30 कंपनीज का एवरेज ऊपर है, 30 कंपनीज का एवरेज नीचे. Now in the 30 company does not matter one or two companies not doing great, another companies are, because average will be maintained. So if you are not, if you're confused that I don't able to decide where I want to make the investment, but I want to make the investment in good companies, then you can invest directly in the index. तब आपके पास आता है index as an option. Instead of one company, you can make the investment in all company at a time. सारी कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हो एक टाइम पर by deciding the index. India's first EV index, electric vehicle index. Now there are two type of people in India, those who want to make investment in electric vehicle. Few people like me, I am always confused, Mahindra and Mahindra buy kar le ya Tata Motors. Why? Tata Motors is doing great, Mahindra and Mahindra is also doing great. Kahan invest karo? Like me. Second type of people, those who don't know where to invest, but they heard that electric vehicle investment is good, वहां पर पैसा लगा देना चाहिए. For them the one option will be for good type of people, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, जो जानते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा लगाओ कहां, because confusion है, both are doing good. It will be first EV index which is launched by NSE. Now we can make the investment here. Your money will be going to the pocket of electric vehicle manufacturing companies, and if that companies will grow, this index will grow, your money will grow. So it is just the investment. ठीक है? So the base of index will be 2nd of April 2018 and value will be 1000. So base इन्होंने 18 का लिया हुआ है, जब से EV आपका स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हो रहा था, and 1000 rupees. So your investment will be going in the companies like Bajaj Auto, Tata Motors, Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki. ये टॉप 4 कंपनीज रहेंगी आपकी इस इंडेक्स में. पॉइंट क्लियर है? यस. हाय सागर, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. आई एम ऑल्सो डूइंग वेल. यस. SBI PO. Sagar, connect with me over Telegram. I will talk to you. Because if you're working on the position of clerk, you should understand like कैसे आप कम टाइम में कवर करें. चलो, थैंक यू सागर, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन. आगे आते हैं अगले न्यूज के तरफ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुइटी लिमिट टू 25 लाख रुपी. प्रीवियस लिमिट वाज 20 लाख. पहले 20 लाख रुपए लिमिट था, अभी गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन. सो ऑल दीज थिंग्स मेड अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन. can anyone tell me who was the chairperson of 7th पे कमीशन? नहीं पता है तो गूगल सर्च करो, फटाफट आंसर लो और मुझे बताओ. Who is the chairperson of 7th pay commission? Why I am asking answer to you guys? आपको याद करना इजी हो जाता है when you search something. जब भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आए, क्विकली देखो, आंसर करो, और once your mind is demanding certain data and you are able to get the data at time, you will be able to memorize it for long time. आप ज्यादा लंबे समय तक उसको याद रख पाते हैं.
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रेच्युटी लिमिट इंक्रीज कर दिया है. ग्रेच्युटी लिमिट इज अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट फंड यू कैन एक्सपेक्ट. एक तरीके का आप मान लो एक तरीके से रिटायरमेंट फंड है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए. तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर बैंक एम्प्लॉयज. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट विल बी एप्लीकेबल. ए के माथुर सर है, करेक्ट है. सो सेवंथ पे कमीशन के चेयरपर्सन थे मिस्टर ए के माथुर, अशोक कुमार माथुर sir. So A.K. Mathur sir was the chairperson. 25 lakh rupees the gratuity limit. Previously it was 20 lakh. So increased from 20 lakh to 25 lakh rupees for the central government employees, not for the banking employees. याद रखना 1st of January 2024 से इसको applicable किया गया है. Issued by the Ministry of Public Grievances. Person aim to benefit the central government employees. तो ये changes हैं. According to 7th Pay Commission इसको change किया गया है. Clear? आगे आ जाओ. Next है Bank Credit Growth Outlook 2025. CRISIL analysis. So CRISIL, it is a credit rating agency. It gives the prediction of the GDP rate as well. GDP वगैरह की prediction provide करता है CRISIL आपका. So CRISIL rating predict slowdown in the bank credit growth for the financial year 25 to 14%. That is the decline of 200 basis point. It means 2% का decline. Compared to the financial year 24, it was 16%. मैं समझाता हूं, समझना बात को. It is not saying that कि credit grow नहीं करेगा. Credit will grow. Credit is going to grow. It is like last year you got the increment of 16%. Last year आपका increment हुआ था salary increment 16%. This year your salary increment will be 14%. So it will be 2% lower than last year. समझो बात, लास्ट ईयर से कितना कम होगा? 2% कम होगा. बट लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल योर सैलरी वॉज 10 लाख रुपी एंड यू गॉट हाउ मच इंक्रीमेंट? 16%. सो दिस ईयर योर सैलरी इज हाउ मच? अभी आपका सैलरी कितना हो गया इस साल का? 11.6 लाख. करेक्ट है, इंक्लूडिंग 1.6 लाख ऑफ लास्ट ईयर इंक्रीमेंट. इस साल आपका इंक्रीमेंट कितना हो गया? 11. इस बार आपका सैलरी कितना? 11.6 लाख. Now you will be getting 14% increment on which amount? 14% increment on which amount? On 11.6, not on 10 lakh rupee. तो ये भी समझो आपका बेस भी इंक्रीज होता है हर साल जब आपका क्रेडिट, मतलब यहां पर ग्रोथ होगा. इवन इट इज कंपेयर टू हायर देन कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट परसेंटेज वाइज इट विल बी लोअर. परसेंटेज वाइज वो कम होगा. लास्ट ईयर योर सैलरी इंक्रीमेंट वाज 16, दिस ईयर 14, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट हायर अमाउंट. बोलो यस और नो, समझ में आया डेटा? क्या बोल दिया मैंने फटाफट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट ग्रोथ. क्रेडिट ग्रोथ मींस loans given by bank, credit card, overdraft, overdraft, cash credit, cash credit. So all these comes under the credit part of bank. So bank credits are the assets of bank. These are the assets of bank from where bank generate profit. Profit कहां से लाता है बैंक? बैंक profit लाता है by generating assets, and these are the assets. So if the credit will not grow that higher, it means assets are not going to create a lot. It means bank will not generate profit. So everything is around this. तो ऐसा नहीं है कि भाई बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा है, ग्रो करेगा. 14% का ग्रोथ है. वी कैन से दैट दिस ईयर द ग्रोथ इज लो, मींस इट इज नॉट दैट फास्ट. उतना फास्ट नहीं है, कंपेरेटिवली कम रहेगा. ठीक है, चलो. बैंक विल फेस चैलेंजेस मैनेजिंग देयर फंड रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन द एक्सेस एसएलआर होल्डिंग. तो एसएलआर होल्डिंग ज्यादा है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है इसका होल्डिंग के कारण में बैंक जो है उसको थोड़ा सा लिक्विडिटी चैलेंजेस देखने को मिलेगा, ये बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. चलो पॉइंट समझ में आया. चलो आगे मूव करें. रिटर्न डाउन मेथड. अच्छा निशु बिल्कुल तुरंत अपना जो कॉमर्स के टर्म्स होते हैं ना ले आते हैं. रिटर्न डाउन मेथड सर. आगे आते हैं अगले न्यूज पर. अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है. डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ. डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ डॉक्टर डॉक्टर एमिनल सॉब डॉक्टर एमिनल सोब्रेन. So Dr. Emmanuel Sobran from France appointed as the Director General of World Organization of Animal Health. Appointed for the tenure of 2024 to 29. 5 years के लिए appoint हो गए.
सो 5 years विल बी इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बोलो यस और नो। अभी आपको दूसरा नाम याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एम्यूनल सेब्रॉन, बट आई नो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस ईयर ओनली, यू डोंट नीड 2025 और 26 टू क्लियर द एग्जामिनेशन, 24 विल बी इनफ, और यही मान के चल रहा हूं मैं। हाँ, so Dr. Seburen, that is Emmanuel Seburen, recently appointed as the Director General of World Organization of the Animal Health. World Organization of Animal Health, headquarter located in Paris, France. It is an organization which work very similar to WHO, World Health Organization, but it work for the animal health. Like WHO work for the human health. इंसानों की जो हेल्थ है उसके लिए काम कर रहा है WHO. So this organization WOAH, this is working for the animal health, very similar to WHO organization है, पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। अगला न्यूज है आपके पास, नेक्स्ट न्यूज है आपके पास, IRDI अप्रूव्ड संदीप बत्रा सर अपॉइंटमेंट एज ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड चेयरपर्सन। ICICI बोर्ड के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं संदीप बत्रा सर, IRDI ने इनका अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली अप्रूव किया है। सो आज टाइम ज्यादा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला और न्यूज भी कंप्लीट नहीं हुआ है आज तो। सो ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड अपॉइंटेड, ICICI ICICI प्रूडेंशियल चेयरपर्सन Sandeep Batra sir, name is confirmed by IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India. Mr. Shah Rukh Khan appointed as the new brand ambassador of Muthoot Panchanam Group. So Muthoot Panchanam Group, Pampacham Group के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए अभी रिसेंटली मिस्टर शाहरुख खान। दिस इज द सेम ग्रुप under which you have lots of companies like Muthoot Finance, Muthoot Gold Loan, Muthoot other brands. So it is one of the leading NBFCs in India, non-bank. One of the biggest non-bank financial company in India is Muthoot. So same company have headquarter in Kerala. Chairperson is Thomas John Muthoot sir, and recently Shah Rukh Khan has been appointed as the brand ambassador. तो ये point है आपके पास। इन नेशनल न्यूज पर आता हूं, बस मैं आज वन लाइनर्स बताकर छोड़ दे रहा हूं, बाकी रिवीजन हम कल कर लेंगे हमारे एमसीक्यूज रिवीजन में। इंडियाज आईआईटी मद्रास स्टार्टअप अंगीकुल कॉस्मोस लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट फुल्ली 3 प्रिंटेड। इंडिया में दो कंपनीज हैं इन प्राइवेट स्पेस एजेंसी कैटेगरी। वन इज दिस अग्निकुल, अग्निकुल इज वन कंपनी। Agnikul is a company which is a private company working in the space technology. एक कंपनी तो आपका ये है। सेकंड कंपनी इज स्काईरूट, एक कंपनी आपके पास स्काईरूट, अग्निकुल, स्काईरूट, these both are the private companies in India, both are working in the space technology category, दोनों ही space technology में काम कर रही हैं। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी, it collaborated with IIT Madras, launched world first 3D printed rocket, पूरे तरीके से 3D printed rocket इन्होंने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। इट वॉज लॉन्च विद द सपोर्ट ऑफ IIT मद्रास एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड दैट इज क्रिएटेड बाय अग्निकुल। एक और पॉइंट याद रखना, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। मैंने बोला दो कंपनी आपके पास, देखो एक का नाम है अग्निकुल, अग्निकुल, सेकंड है आपके पास स्काईरूट, स्काई। सो इंडिया का फर्स्ट जो प्राइवेट लॉन्च पैड that is created by Agnikul, but India's first private rocket name was Vikram, that was launched by Skyroot, वो Skyroot ने लॉन्च किया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, so you have to remember both and they will create confusion in the examination for sure, ठीक है। तो इन्होंने जो फर्स्ट लॉन्च पैड है, प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड, इसको नाम दिया धनुष। धनुष, so धनुष is the name of Dhanush is the name of first private launch pad and Vikram is the name of first private rocket. पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या रखा है? विक्रम रखा है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। Which company developed the first semi-chronogetic engine powered rocket launch? So this was also Agnikul Sky. ये भी आपका अग्निकुल स्काईरूट ने लॉन्च किया था, ठीक है। बाकी विक्रम एस है, विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट, इट वाज क्रिएटेड बाय स्काई। तो मैंने दोनों कंपनीज के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी ऑफ दैम, ठीक है। इसरो एंड विप्रो,
इसरो एंड विप्रो 3D कोलैबोरेटेड 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। तो इन्होंने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। इसरो ने इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी? विप्रो। सो विप्रो कोलैबोरेटेड विद इसरो, मेड 3D printed rocket engine, India's first PSLV, India's first polar satellite launch vehicle that is 3D printed। इसको अलग से सेटअप नहीं किया गया, डायरेक्टली प्रिंट किया गया है। सो फर्स्ट 3D printed rocket launcher that is PSLV, it is created by ISRO in collaboration with Wipro। इसरो ने विप्रो के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। Kerala introduced artificial intelligence learning in the school textbook। सो केरला इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग, एआई इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स विल बी स्टार्ट रीडिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। सो एआई वगैरह के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे केरला के बच्चे। सो फर्स्ट state government which have started introducing artificial intelligence in the school textbook। Kerala decision incorporating the artificial intelligence will give the idea to the student about the artificial intelligence at the school level। Otherwise it was the subject when we started reading about the college level। समय वैसे भी बिजी होते हैं कॉलेज के टाइम पे, पढ़ाई के अलावा ही काफी काम होते हैं, तो पढ़ाई हो नहीं पाती अच्छे से। So that is why school level they will be able to read about the artificial intelligence properly। ठीक है, आगे आ जाओ। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रिसेंटली ज्वाइन रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज इन अलास्का। So Red Flag 24 is the defense exercise. It is a multinational defense exercise conducted in Alaska, USA from the side of India। Indian Air Force participated into this। तो Indian Air Force ने इसमें participate किया था। Global Parents Day observed on 1st of June every year। Important है, याद रखना। नहीं किया था विश तो आज विश कर देना। सो इट वाज ग्लोबल पेरेंट्स डे ऑन 1st ऑफ जून एंड वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1st ऑफ जून। वर्ल्ड मिल्क डे भी आपका 1st ऑफ जून को ऑब्जर्व होता है। तो ये थे आज के सारे न्यूज। आई होप आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन टाइम। टाइम ठीक है, ज्यादा भी हो गया तो चल जाता है, बट ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। So please like the session guys, subscribe the channel if you're watching the session for the first time। Do not miss to use the coupon code Aditya on the Oliveboard courses when you are going for it। अभी आपका ऑफर चल रहा है, चैंपियन ऑफर वगैरह चल रहा है। कोड आपको आदित्य ही डालना है, आपको पता है यूनिवर्सल कोड है। आपको डेली नए नए कोड यूज करना नहीं है, सेम यूज करो, दैट इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, चलो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग Oliveboard गाइस, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।